Hello, everyone. Good evening. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin team, and I'm sure all of you must be keeping good health. You must have come across people, especially women, with brown color patches on their face. They seem like freckle, like spots forming large flat patches. This is nothing but melasma. Melasma is a very common chronic skin condition in India. According to a study conducted across 4 Indian cities, reveals that more than 80% of the population presents skin color heterogeneity on the face, irrespective of age and gender. This heterogeneity mainly results from hyperpigmented spot or melasma. Indian skin tone more prone to pigmentary disorders. It occurs mainly in women, 90%, and 10% of males of all ethnic and racial groups. Around 20 to 30% of 40 to 65-year-old women present a facial melasma. Melasma and hyperpigmentation generally ignored as sign of aging and often misunderstood skin condition. Melasma sufferers have been misinformed about aspects of this very common hyperpigmentation issue. This can lead to frustrating setback in treatment. To avoid all these hazards and to keep you informed, today we are here to know about management of melasma from an expert. So let's connect today with our skin expert, Dr. Mahika Goel. She is consultant dermatologist and cosmetologist based at Nagpur. Dr. Mahika has done MBBS followed by MD from NKP Sims Nagpur and fellowship in dermatoaesthetics and dermatosurgery from Dubai. She is one of the leading dermatologists whose first motto is patient satisfaction. Her expertise lies in clinical and aesthetic dermatology. With her expertise today, Doctor will enlighten us more on melasma and its management. A very warm welcome to you, Dr. Mahika Goel. Thank you so much, Samyukta. Hope you're doing well, and a very good afternoon to you and all the listeners and viewers out there. Thank you so very much, Dr. Mahika, for joining us. It's such a pleasure to have a luminary like you. And because melasma is so common, right? And there's we can say in a way, crisis of information on melasma, right information. And today we seek the same from you. To start with, Doctor, what is melasma? Like you absolutely said, it is a rampant diagnosis these days. It has become one of the most common diagnoses that we come across in the OPD as well. The sad part being that it is almost underreported and underdiagnosed. So I can't even imagine the actual extent of the patients who are suffering from melasma because they don't come to the OPD itself. Melasma is a very, very common condition. It is basically a pigmentary disorders. By pigmentary disorder, I mean a condition in which skin develops a pigment in this case. So it is an acquired condition. It is not a genetic condition per se. So you will acquire this condition. In this, we see hyperpigmented. By that, I mean dark colored patches. So they may be small patches or they may coalesce to form larger patches. Most commonly, they are seen on the face, wherever the sun hits the skin first. So the most sun exposed parts of the face, meaning the temple region, the forehead region, the plumpy parts of your cheeks, the bridge of the nose. So these areas are the most common areas where you will get melasma. So mostly they will present as symmetrical. That means you'll present it on both the sides of the face. You'll have brownish to blackish to even dark gray colored patches, and they'll be on the sun exposed parts of the face. Right. So, doctor, is sun the only culprit और या दूसरे भी वजह होते हैं melasma के पीछे? क्या-क्या causes हो सकते हैं? This is a very tricky question because it has a variety of reasons what can cause melasma. However, sun is the most common, I will say, cause for causing melasma, mainly for Indians because it's such a hot country. There is so much UV radiation also here. There is so much light in our country. So sun is definitely one of the most common reasons which cause melasma. Sun is still okay. What we Indians lack is awareness. So we fail to protect ourselves from sun. So that is why sun becomes a very common cause. Other than that, some drugs may actually even cause melasma.
In females, oral contraceptive pills काफी commonly लिए जाते हैं. So sometimes OC pills may also cause melasma. Other than that, sometimes wrong application of some creams which you buy over the counter, और कभी कोई friend suggest करता है, कभी colleague suggest करते हैं, कभी ये गलत creams लगाने के कारण भी melasma like pigmentation may occur, which is misdiagnosed as melasma. So in females, hormonal changes are also a very common cause. Uh, by the grace of God, females do undergo various types of periods in life. So, be it pregnancy or be it the other extreme of menopause. So, whenever the body undergoes a lot of hormonal fluctuations, so melasma can also occur because of that. Other than that, sometimes there might just not be any reason for it. It may not have any direct cause, and you might get these pigmentary conditions. Mhm. Now, Dr. Melasma is one term, but then common people are not very much aware of it, right? जब हम किसी लेवन से पूछते हैं या आमतौर पे कहा जाता है कि पिगमेंट्री इशू है या हाइपर पिगमेंटेशन हो गया. So my question to you is, are they the same thing, melasma and hyperpigmentation, or are they different? Most commonly in Indians, in Hindi, वांग के नाम से भी जाना जाता है. So most of the people they present with the problem saying हमें वांग के दाग हो चुके हैं. But as to answer your question, melasma and hyperpigmentation is not the same thing. There may be a variety of diagnoses which occur over the cheeks, which present in a similar manner of having brown patches over the cheeks, over the forehead, but they may not be just melasma. So usually what we term as post-inflammatory hyperpigmentation. So a lot of people confuse any type of hyperpigmentation and call it melasma, but it is a different condition. The diagnosis is different, the treatment is different, and the approach will also be different. So unless you get a proper diagnosis, you will not be really satisfied with the treatment also, unless you know exactly what you're suffering from. So hyperpigmentation is just a vague term which just means increase of pigmentation. Under hyperpigmentation, we have a lot of different diagnoses which may occur. So over the cheeks, you can have freckles, you can have DPNs, you can have basic PIH changes, or you may have melasma. So hyperpigmentation is just a common term, whereas melasma is a direct different diagnosis. Right. So hyperpigmentation is a broader term, right? Doctor, who are at risk? What are the risk factors for melasma? Melasma, for the risk factors, I would say females are more prone to getting melasma because, like I said, the hormonal changes which occur in a female's body are different. The skin tone is also a big factor for being at risk of melasma. Melasma is more common in darker skinned individuals. So, other than that, in pregnant women, they may be at risk of getting melasma. In that condition, we call it a different term. We call it as cloasma because that has a direct relation with the estrogen levels in the body. Other than that, after menopausal, females may be at more risk. If some females are taking some specific drugs, you should always take any type of drug only after a prescription from your qualified doctor for any type of condition that you may be suffering, because some drugs may cause some unwanted side effects if not taken under proper qualified doctor's instructions. So at risk, especially people who are going out in the sun a lot without any sun protection, without using sunscreens, or without covering their faces in the adequate manner. So they are definitely at more risk for getting melasma. Right. Now, the normal tradition in our society is will A associated with sign of aging. तो आमतौर पे लोग कहते हैं, महिलाएं कहती है कि अरे अब तो एज हो रही है या मैं डायबिटिक हूँ और there are other factors, इसलिए ये तो हो ही रहा है तो इसके साथ ही रहना. Or B, they'll go for over the counter products, creams, किसी दोस्त ने बोल दिया, फैमिली मेंबर ने बोल दिया, या वाले भैया ये पिगमेंटेशन हो रहा है कुछ दे दो. This is so common in our society, sadly. Now, what's your say on both of these aspects? एक, इसे age के साथ associate करना, and secondly, over the counter medication. To answer your first part, if it is related to age and age के साथ हो भी रहा है तो फिर क्या करना है?
डेफिनेटली एज बढ़ेगी तो स्किन में चेंजेस तो आते हैं. In India, awareness regarding skincare is relatively less. So the protective steps are usually avoided. और लोग आते हैं जब उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है. तो आई थिंक विथ अवेयरनेस even the extent of the condition will be much lesser and you will get faster treatment. तो एज तो होगा, एजिंग को हम स्टॉप नहीं कर सकते, but definitely our acceptance towards aging can improve if we have a good proper skincare routine. So your aging process definitely gets much delayed. जो पिगमेंटरी चेंजेस एज के साथ में एक्सपेक्टेड होते हैं वो डेफिनेटली अगर आप प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करेंगे और प्रोटेक्शन फॉलो करेंगे स्किन का तो वो लेट भी होंगे और वो मिनिमल भी होंगे, और अगर आपने अच्छे से किया तो वो बिल्कुल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है. तो एज रिलेटेड एक्सेप्ट करना 30 to 40% आई विल अग्री कि एज को एक्सेप्ट करना है हमें, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इसके लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है. Everybody wants to look good these days, and the great thing is that people's awareness is absolutely increasing a lot. So they want to look good, they want to spend on themselves to look good. So एजिंग के साथ में अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, इसमें डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे if you consult a proper dermatologist who is qualified to treat skin conditions like this, because this is not a very easily treatable skin condition. So merging with your second part, इसमें रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड और अच्छे और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे. तो इसमें प्रिवेंटिव स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है और क्यूरेटिव स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है. प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस अच्छी बात है, आप सनस्क्रीन रोज लगाइए, आप सन प्रोटेक्शन अच्छे से कीजिए. ट्रीटमेंट के लिए आप एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए. Along with that, with age, you also get wisdom. So I expect with wisdom, आप patient के साथ में patience भी रखिए, because this is a chronic condition. This requires some time, some patience and compliance from both our ends. So अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे, करेक्ट टाइम पे जाएंगे, प्रॉपर मेडिसिन फॉलो करेंगे और शांति से पेशेंटली उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जिससे आपको भी सेटिस्फैक्शन रहेगा. And definitely you will look better, you will automatically feel better. Once you feel better, जो एज के साथ में स्ट्रेस भी accumulated रहता है वो पिगमेंटरी चेंजेस आप अपने आप कम होने लगेंगे if you start feeling better about yourself. You have put it so well. Right. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सही वक्त पे डॉक्टर के पास जाए. मुझे लगता है डॉक्टर माइका कि ओवरनाइट हमको मेलास्मा नहीं होता, राइट? हमको थोड़े थोड़े स्पॉट्स बनने पहले दिखने लगते हैं. आई थिंक दैट्स अ बिग साइन अगर हमें पता है कि ये मेलास्मा है. अगर नहीं भी मेलास्मा पता है, यही पता हो कि एक हाइपरपिगमेंटेशन है या पिगमेंटरी इशू है और हम डॉक्टर को दिखाए तो शायद उसको बहुत ज्यादा स्प्रेड होने से हम रोक सकते हैं. Preventive measure का आपने जिक्र किया. You said, it's important to take care of your skin. एक good, अच्छा skin care regimen is very important. Sunscreen is very important. Now let's talk about sunscreen, because initially you have already explained that how big culprit sun is, and how it is responsible in most of the cases for melasma. Now sunscreen के लिए इतने सारे myth है या इतने सारे complaints हैं लोगों के. People will say, my exposure under the sun is, it's hardly any exposure. I work from home, or I mostly, stay inside home. I don't work. I just, cook in the kitchen. Why do I need sunscreen? But the fact is, वो महिलाएं भी जो बाहर नहीं जाती है, किचन में ज्यादा उनका वक्त बीतता है, उनको भी मेलास्मा होता है. जो धूप में बहुत ज्यादा नहीं निकलते, उनको भी मेलास्मा होता है. वर्क फ्रॉम होम पिछले 2-2.5 साल से हमने देखा, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने मेलास्मा और पिगमेंटरी इश्यूज का कंप्लेन किया. So is it just protecting from the sun, और जो दूसरे radiations है वो भी equally damaging है हमारे skin के लिए? Why sunscreen is so important? That's a great question that you've asked. Sunscreen का importance मैं कहते कहते कभी नहीं थकूंगी, because I have seen the magic myself, on myself also, and on all of my patients also. With sunscreen, it definitely requires time for you to see the change. आपको overnight कभी भी कोई pigmentary changes usually overnight नहीं होते, slow changes रहते हैं. तो जब डैमेज भी स्लोली हो रहा है, आपको ठीक होने के लिए भी वो स्लोली ही होगा, इसलिए आपको समय तो देना पड़ता है. With sunscreen use,
वी आर ऑलवेज एक्सपोज टू रेडिएशन अराउंड अस. हम कुछ भी कर रहे हो, आज के जमाने में हम रेडिएशन से सराउंडेड होते हैं लिटरली. अगर मैं अभी कमरे के अंदर बंद हूँ, फिर भी मेरी ट्यूबलाइट शुरू है, मेरा कंप्यूटर स्क्रीन शुरू है, ये सबसे मुझे डायरेक्ट रेडिएशन आ रहा है. आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू अ विंडो, इफ आई ओपन माई ब्लाइंड्स आई विल बी एक्सपोज टू डायरेक्ट लाइट ऑन माई फेस ऑल्सो. अगर मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रही हूँ, फिर भी मेरे विंडो से कॉन्स्टेंट लाइट आ रही है. सो इट इज नॉट जस्ट द सनलाइट, but it is also any type of radiation which comes to you. So if you're cooking, the heat from the gas stove is also enough radiation to actually cause potential damage to your face. So we're always surrounded by radiation in this new technological world. Other than that, कुछ नहीं तो आप हमेशा फोन पे व्हाट्सएप तो स्क्रॉल करते ही रहते हैं या इंस्टाग्राम आजकल देखते ही रहते हैं, तो आपके Right. फेस को हमेशा एक्सपोजर रहता ही है. तो इसलिए दिन में 2 बार सनस्क्रीन लगाने का मैं सजेशन दूंगी आपको, एक बार सुबह और एक बार दोपहर को. सुबह एक बार जब आप घर से निकलने के पहले, आपके काम पे जाने के पहले एक बार, रेडी होने के बाद अराउंड 9-9:30 एक बार आप सनस्क्रीन लगा के निकले. इफ पॉसिबल यू कैरी द स्मॉल ट्यूब विथ यू और कीप वन एट योर वर्क प्लेस इफ इट्स पॉसिबल, और एक बार आफ्टरनून में रीअप्लाई कीजिए. सिर्फ कुछ केसेस में मैं बोलूंगी, इफ यूर एब्सोल्युटली इंडोर्स और लाइट भी नहीं ऑन है, टीवी भी नहीं ऑन है और विंडोज भी नहीं है, तब शायद मैं आपको बोलूं कि ठीक है आप सनस्क्रीन में भी अवॉइड करें, बट ऐसा सिचुएशन हमारे आजकल के जमाने में नहीं आ सकता है. सो Right. प्रिवेंटिव स्टेप के लिए वो बहुत अच्छा रहता है. अगर माइल्ड सुपरफिशियल मेलाज्मा हुआ है तो मेनी अ टाइम्स इट जस्ट रिस्पॉन्स टू ओनली सनस्क्रीन यूज. यू डोंट इवन नीड एनी हार्श ट्रीटमेंट्स. अगर आपने जल्दी मेलाज्मा का डायग्नोसिस catch kiya, so then many a times it responds to just good sun protection. And even if you have developed melasma patches, still उसको प्रोग्रेस करने से हम बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर सन प्रोटेक्शन करें. For sunscreens, I will say I won't suggest brand names, but definitely physical sunscreens are something that a patient of melasma should go for. In physical sunscreens, आप sunscreen को पीछे टर्न कीजिए और उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स में टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये कंटेंट्स अगर मिलेंगे, so that will be a mineral sunscreen or a physical sunscreen. So that is really helpful if you have any type of pigmentary disorders on your face. अदर देन दैट ऑफ कोर्स यू कैन कंसल्ट योर डर्माटोलॉजिस्ट, वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको सनस्क्रीन सजेस्ट करेंगे, सो दैट यू Right. डोंट फेस एनी अदर इश्यूज रिगार्डिंग ऑयलीनेस और वाइट कास्ट. और इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर सनस्क्रीन मिलेगा. सो दैट जो सनस्क्रीन से एक हेजिटेशन रहता है कि मेरा स्किन ऑयली हो जाता है या मुझे पिंपल्स आने लगते हैं, वो एक फियर आपका हट जाएगा अगर आप प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद सनस्क्रीन यूज करना स्टार्ट करेंगे तो. राइट. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सही सनस्क्रीन यूज करें विच इज एज पर आवर स्किन टाइप और जो भी हमारा वर्किंग कंडीशन है उस हिसाब से. और इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम एक क्वालिफाइड डर्मेट के पास जाए, वो हमारी हेल्प करेंगे इन चूजिंग अ करेक्ट और बेटर सनस्क्रीन. लेकिन इन केस किसी वजह से हम नहीं जा पा रहे या कोई अदर इशू नहीं है, वी हैव जस्ट वी जस्ट वांट टू स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन ऑन अ रेगुलर रिलीजियस बेसिस. सनस्क्रीन के ट्यूब पे, उसके बॉक्स पे इतने सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एसपीएफ टू बूट स्टार रेटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, वाटर रेजिस्टेंस एटसेट्रा. क्या बेसिक चीजें हैं डॉक्टर जो हमें देखनी चाहिए बिफोर बाइंग अ सनस्क्रीन, स्पेशली अगर मेलास्मा या हाइपरपिगमेंट्री इश्यूज से हम अपने स्किन को प्रिवेंट करना चाहते हैं? So sunscreens में broad variety. Usually it may be a lotion form, it may be a gel form, it may be a creamy form. So if you have very dry skin, you can go for a creamy form or a lotion form. And if you have acne prone skin, then I will suggest you go for a gel form of sunscreen. So ये मेन फर्स्ट, अगर आपको सनस्क्रीन का नाम देखेंगे तो उसके बाद में लोशन, जेल, क्रीम ये लिख के आएगा, तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं. Then what you have to go for is a broad spectrum sunscreen. Only then your sunscreen will be effective for you. What else you can see is the SPF factor. So SPF, अगर आपका डेली रूटीन कम्यूट टू वर्क प्लेस, कमिंग बैक, और अगर आप एक हाउस वाइफ है, so then SPF 30 is more than adequate. This is a myth which I would like to clear कि जितना ज्यादा SPF हम लगाएंगे उतना ज्यादा हमको बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा और मेरा पिगमेंटेशन एकदम सॉल्व हो जाएगा. ये एक मिथ है. SPF 30 is very much adequate and very much effective for your skin. इनफैक्ट अगर आप SPF 50 की तरफ अननेसेसरीली उसको यूज करेंगे तो इनफैक्ट आपका ऑयलीनेस का प्रॉब्लम बढ़ सकता है. सनस्क्रीन लगाने के बाद में आपको व्हाइटिश एक लेयर दिखता है, वो उसके साथ इंक्रीज हो सकता है.
तो unless you are going for high altitude or extremely tropical places जहाँ पे sun का effect ज़्यादा होता है, तो 50 लगाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ SPF 30 भी दिख सकते हैं. Right. So these are the basics that one can go for when you're buying or getting a sunscreen for yourself. In pregnancy, again, as you have already mentioned, melasma is quite common, right? What should a pregnant lady do? Or keeping in mind कि जब आप pregnant होते हैं तो आप over the counter medication बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई भी oral medication खुद से नहीं खा सकते. कई बार तो sunscreens पे भी लिखा होता है, कि it's, if you are pregnant or lactating, you need to consult to your dermat before you apply this. So melasma अगर है pregnancy में क्या करना चाहिए? So if you have melasma in pregnancy, firstly, my suggestion will be to not to stress about it. Don't worry, don't stress. The more you stress, the more it will increase. With pregnancy, you're already undergoing through so much change in your body. You're undergoing through such a beautiful natural process of life that I think if you stress about your skin issues, it will take away from the happiness of such a beautiful event for your life. तो उसके बारे में टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए. वी विल फिक्स एवरीथिंग. यू कम टू अस आफ्टर योर प्रेगनेंसी, सब ठीक हो जाएगा. तो टेंशन नहीं लेना इज द सबसे टॉप पॉइंट जो मैं इसमें सजेस्ट करना चाहूंगी. अदर देन दैट, आप अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट डाइट जरूर फॉलो कीजिए. तो इसमें आप डाइट में बेरीज इंक्लूड कर सकते हो, विटामिन सी रिच फूड्स यू कैन हैव मोर. सो अगर आपका इंटरनली बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस थोड़ा सा कम रहेगा तो पिगमेंटरी चेंजेस भी कम रहेंगे. स्किन में लगाने के लिए टॉपिकली व्हाट यू कैन डू, देयर आर सम ingredients which are very safe in pregnancy. Make sure you apply creams or actives only suggested by your dermatologist. So azelaic acid and even niacinamide is very safe to be used in pregnancy, but only under the prescription of your dermatologist. Don't go for over-the-counter medications at all. You can go for physical sunscreens also, but make sure they're suggested by your dermatologist. Don't buy OTC sunscreens also. Many a times, just because sunscreens come with a slight cost factor in comparison to the OTC creams, people do tend to purchase those. But I would like to emphasize on this that there is so much research and development that goes behind producing the pharmaceutical sunscreens that now we know what ingredient can cause what and how much of each ingredient is important for whom. तो जो OTC सनस्क्रीन्स रहेंगे उसका रिसर्च इतना नहीं होता है, उसका आपको श्योरिटी कोई नहीं दे सकता है. स्पेशली इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर व्हाट यू आर इंजेस्टिंग और व्हाट यू आर अप्लाइंग ऑन योर स्किन. Other than that, you can definitely take other physical barriers which you can use a hat whenever you're going out, use sunglasses whenever you're going out. If possible, tie a scarf on your face ताकि direct sun protection से आप बचा सकें. Right. So physical barriers can also be used along with sunscreen for normal conditions, and of course pregnancy में तो जो भी करना है वो डॉक्टर के सजेशन पे करना है. Physical barriers जरूर आप यूज कर ही सकते हैं. How do you diagnose melasma, doctor, when a person comes to you? Just by the clinical investigation, or you also suggest some tests, etc.? For melasma, it is basically a clinical diagnosis. There are no blood tests per se which are needed for melasma unless we see some metabolic condition associated with melasma. If we are probably thinking of some metabolic disorder which can be a coincidental association. Other than that, there are no blood tests which are needed. There are no invasive tests which are needed. इसमें skin biopsy वगैरह करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. Just if needed, then Wood's lamp examination हम कर सकते हैं. That is for us to know the depth of melasma. तो अगर वो superficial है कि medium depth है कि बहुत deep है वो pigmentation, इसको differentiate करने के लिए हमारे पास एक clinic में tool रहता है which is called as a Wood's lamp. We can use that to know the depth of the pigment deposition in the skin because that will determine the kind of treatment that we have to give. Okay. And doctor, what are the treatment options available? So melasma, like I've already stressed enough, is a major association with a lot of stress which happens in our body. So not to stress about melasma because you have to eventually accept that you are suffering from melasma. So if you stress, then there is cortisol secretion.
in our body. So जितना stress hormones body में secrete होगा उतना skin में pigmentary changes, hair में changes, nails में changes आपके दिखेंगे. So firstly is acceptance. Secondly is taking proper treatment. Acceptance and ignorance नहीं, acceptance and doing steps for it. So ट्रीटमेंट के लिए आप सबसे पहले उसको स्टॉप करेंगे कि प्रोग्रेस होने से हम उसको रोक पाए. So sunscreens are important. Other than that, we have to use some active serums for your skin. So vitamin C serums are also good. We use some triple combinations for your skin, which also give good results, only to be used under your doctor's prescription. We have azelaic acid also. We have niacinamide. We have kojic acid, lactic acid combinations which are available as serums. So a good strength of these serums is important. जिससे आपको adequate और satisfactory results मिलेंगे. इसके साथ I will advise to always combine the treatments with some in-clinic procedures also. So for procedures, we can go for some chemical peels, we can go for some TCA peels, some yellow peels. So जिससे आपको और better results मिलेगा, थोड़ा faster results मिलेगा. Some laser treatments are also available for melasma. So अगर आप एक combination treatment में जाएंगे, तो आपको definitely better इसमें result मिलेगा. प्रोसीजर्स की बात हम करते हैं जब, तो डेफिनेटली दे आर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट लाइक यू, और आपके क्लिनिक्स होते हैं. इसके अलावा दे आर लॉट ऑफ क्वैक्स, राइट? प्लस दे आर पार्लर्स, और पार्लर्स में भी कहते हैं कि हम पील कर देंगे एंड यू नो ठीक हो जाएगा. कई बार इन सब में हम वी फॉल प्रे टू ऑल दिस क्वैक्स एंड एटसेट्रा. इन्फ्लुएंसर्स तो है ही ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, तो यहाँ क्यों नहीं जाना है? Why not to fall for all these quacks, parlors or influencers or social media, and how harmful or dangerous it would be for our condition? संयुक्ता ने दुखती रस पे पैर रख दिया. ठीक है. Okay. So this is a really, really sad situation of our country because एक rules और regulations follow नहीं हो रहे हैं. So definitely quackery has increased rampantly in our country. By quackery, what I mean is when individuals who don't have the qualification or the education to pursue a profession, they are pursuing it and also prescribing allopathic medicines without a proper degree and without proper qualifications. So उनके पास क्यों नहीं जाना? क्योंकि उनके पास proper education का background है नहीं. So it takes us a minimum of 10 years to study the human body, to study the human skin. We need just 3 years is just to study the human skin and its different diseases. So 10 years का education को आप 3 months का एक short term unrecognized course से compare नहीं कर सकते हैं. हर chemical का concentration उसको कौन से पेशेंट्स में यूज करना है, किस टाइप के प्रोसीजर के लिए यूज करना है, कितने देर तक एक केमिकल यूज होना चाहिए, कौन से कंपनी का केमिकल से कैसा रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, ये सब ओवर एक्सपीरियंस एंड ओवर एजुकेशन ही आता है. सो आई थिंक just because nowadays dermatology has become a really fascinating branch for a lot of people. So literally हर लेन में आजकल cosmetology clinics और parlors and salons have started doing chemical peels. They have started doing laser hair reductions. But in our clinics we see the brunt of that. जब हमारे पास patients आते हैं वहां से skin burns लेके, जहाँ पे hair नहीं था वहां पे उल्टा hair growth लाके, unnecessary उनके side effects suffer करने के बाद, तो they do save money for a one-time treatment, but they end up wasting the next 6 months just getting treated from that previous bad episode. So eventually लेने के देने पड़ जाते हैं like we say. So I would request everyone, this is a great platform that I'm able to reach a lot of people and try to create more awareness कि please आप qualified doctor के पास ही जाइए. कोई भी condition से आप suffer कर रहे हो, be it skin, be it any heart problem, be it any other surgical problem, हमेशा आप degree check कीजिए doctor की. For dermatologists, they should have an MBBS degree followed by either an MD, or they should be a DNB, or they should be a DVD in skin specialist. जो आजकल other professions are trying to
do these procedures and give allopathic medicines. It is just sad, and I just feel कि unnecessary causing harm to people who are जिनकी कोई गलती नहीं है. So always research on your doctor. Slowly इसका भी awareness बढ़ेगा, but I would be happier if you don't suffer and then you come to us. Rather, just directly go to a proper dermatologist so that you don't have to go through the process of suffering and then ending up spending more money instead. राइट अगर हमें किडनी से रिलेटेड कोई इशू पता चलता है कि किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली या किडनी लेवल बहुत हाई है या फिर हमें हार्ट से रिलेटेड कोई ब्लॉकेज पता चलता है वी डोंट गो फॉर ओवर द काउंटर मेडिकेशन एट दैट टाइम या फिर हम पैक्स के पास नहीं जाते. हम सबसे पहले ढूंढते हैं एक अच्छा क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है शहर में, फिर उनके पास जाते हैं. बट विद स्किन आई थिंक वी 3 different people, we ask for their reviews, we ask for their recommendations, and then we decide on the doctor. Now अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपको डेंटल केरीज और डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में बताऊंगी, so then that will not make sense. So then why does it make sense to people that they're going to other unqualified specialists for that? Right. I think स्किन को लेके हम थोड़े हो जाते हैं और हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिस्क ले लेते हैं, which is not good for us. So please don't do that. Go for a qualified dermatologist in case you want to use your internet skill, how tech savvy you are. Please use it to find out a nearby qualified dermatologist that will actually help you. You will end up saving your energy, your money, your time, and most importantly, your health, your skin. बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस भी मैं ले लेती हूँ. एक गिनी शर्मा है हमारी व्यूअर, उनका क्वेश्चन है, आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स और रिस्क एसोसिएटेड विद मेलास्मा ट्रीटमेंट्स? Hi Ginny, so to answer your question, risks associated with melasma treatments is a very vague question, but if you are self-treating yourself, then हर क्रीम का साइड इफेक्ट हो सकता है, हर ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है. So like I just said, कौन सा क्रीम और कौन सा मेडिसिन किस में देना है, कब तक देना है, कितना कॉन्सेंट्रेशन में देना है, कभी किसी को कंबाइन करके देना है, तो ये सब फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं. So if you are getting treatment from someone who is educated enough to give you a proper treatment, then the risks associated may be there, but then the pros will always be more and you will see satisfactory results. But definitely whenever you're taking treatment, आप हमेशा डॉक्टर को फॉलो अप जरूर दीजिए. बहुत बार मेलास्मा के पेशेंट्स फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन लेके दे कंटिन्यू अप्लाइंग द क्रीम्स फॉर मंथ्स एंड दे डोंट कम टू द क्लिनिक फॉर अ फॉलो अप. So in those cases, you definitely can have some side effects. If you keep applying those creams, if you keep continuing the treatment on your own, more than the advised duration by the doctor. Right. Another question by Sonam Sarate, though again it looks vague to me, but still it's a very common question that people often ask. Doctor, how long does it usually take for melasma to fade or improve with treatment? Okay. Thank you for the question. That is a very absolutely fair question because I understand melasma के साथ बहुत frustration associated होता है naturally. I absolutely understand that. Unfortunately, it takes some while for you to see the results for melasma treatment. Give it 2 to 3 months at least to see some changes because the pigmentation of melasma is usually very deep. तो कोई भी डीप पिगमेंट ऊपर आने में स्किन का जो साइकिल रहता है वो एटलीस्ट 28 डे का साइकिल होता है. तो जब एक सेल नीचे से ऊपर आता है तब उसको एटलीस्ट 28 डेज लगते हैं एक साइकिल कंप्लीट करने में. तो जब पिगमेंट डीपर रहता है उसको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है. तो 28 डेज मतलब 1 महीना का टाइम हो गया. तो जब सुपरफिशियल मेलास्मा, जब लाइट ब्राउन कलर के पैचेस है, तब आप 1 से 1.5 महीने में थोड़ा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है. बट अगर थोड़ा डार्कर ब्राउन पैचेस है या थोड़े ग्रेइश ब्राउन पैचेस है, तब आपको डेफिनेटली 3 to 4 months का टाइम लगेगा टू सी सम चेंज. बट 5 to 6 months is an average time that I will suggest that you keep continuing the treatment properly, and then after that we can put you on some kind of a maintenance regimen ताकि आपको बार बार डर्मेट के पास नहीं जाना पड़ेगा, but you can maintain the good results that you've gotten after 5 to 6 months of proper follow up with the doctor. Yeah, and again, don't wait कि जब तक melasma बहुत ज्यादा स्प्रेड ना हो जाए. जब भी आपको इनिशियल साइंस दिख रहे हैं तो प्लीज गो एंड विजिट अ डर्मैट. डॉक्टर, कैन melasma be a hereditary thing? Melasma is not a hereditary condition per se. Genetically, अगर
मेरी मॉम को मेलाज्मा या मेरे डैड को मेलाज्मा है तो मुझे होएगा ही, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट देयर हैव बीन स्टडीज विच शो दैट जिन फैमिलीज में मेलाज्मा पाया गया है उसमें इसके चांसेस थोड़े ज्यादा है। So if you have family history of melasma, then you might be a little more prone to getting it, but that is definitely preventable if you do proper care early on. अगर आपको पता है इनफैक्ट की फैमिली में हिस्ट्री है तो आपने डेफिनेटली प्रोएक्टिव होके पहले ही थोड़ा प्रिवेंशन स्टेप्स ले लेंगे तो आपको वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या होंगे डॉक्टर, बिकॉज प्रिवेंशन एनीवेज इज ऑलवेज बेटर। So for prevention, फ्रॉम अ यंग एज आई वुड सजेस्ट कि आप सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर, ये बेसिक स्टेप्स है एकदम। सिर्फ मॉइस्चराइजर हम वैसे ही लगाते हैं। मॉइस्चराइजर में मैं सजेस्ट करूंगी आप हमेशा डर्मेट से एक मॉइस्चराइजर सजेशन ले लें और सनस्क्रीन का सजेशन ले लें, रादर देन आप ओटीसी कुछ क्रीम्स लगाते रहे। तो बेसिक मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, इसको भी अगर आपने कंटिन्यूअस रिलीजियसली फॉलो किया, by this I mean sunscreen should at least be 2 finger of quantity। तो 2 फिंगर्स पे लेना, इतना और इतना, और ये आपका फुल फेस कवर करेंगे। और नेक को भी इंक्लूड करेंगे तो आपको 3 फिंगर्स पे लेना है, तभी सनस्क्रीन का एडिक्वेट क्वांटिटी माना जाता है। यूजुअली आदत रहती है कोई भी क्रीम को हम डॉट 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 करके लगा देते हैं, इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सनस्क्रीन जब तक एक यूनिफॉर्म फिल्म नहीं बनाएगी आपकी स्किन पे तब तक वो आपको असर नहीं देगी। तो प्रिवेंशन will only be possible if you apply good and adequate quantity of sunscreen. If you reapply sunscreen, then it is even better and will give you the best results. उसके बाद जब आप अर्ली 20s में जाते हैं तब आप एक प्रोटेक्टिव सीरम स्टार्ट कीजिए। यू कैन स्टार्ट विद अ विटामिन सी सीरम, यू कैन स्टार्ट विद अ नाइसिनामाइड सीरम। तो ये सीरम से एंटीऑक्सीडेशन भी होता है, थोड़ा डीपिगमेंटेशन भी होता है। अगर एंटीऑक्सीडेशन होता रहेगा तो सन का जो डैमेज स्किन पे नेचुरली होता है वो काफी कम होएगा और लॉन्ग टर्म मेलाज्मा होने से आपको प्रिवेंट करेगा। Then once you've crossed your late 20s or you begin with your early 30s, then definitely you should incorporate retinol in your skin care. तो ये सब स्टेप्स से आपका स्किन का जो बैरियर रहता है वो हेल्दी मेंटेन रहता है। जो एक सेल जब स्किन का ऊपर जाके डेड सेल बन के एक्सफोलिएट होता है, सो दिस इज कॉल्ड अ स्किन का टर्नओवर। तो टर्नओवर हमेशा आपका हेल्दी और प्रॉपर मेंटेन रहेगा। तो अगर ये सिस्टम्स रेगुलेटेड रहेंगे, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्किन पे कम होएगा, सन का डैमेज से आप प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये सब प्रिवेंटिव स्टेप्स से आपका मेलाज्मा होने के चांसेस विल बी लेसर। ओके, हमारे एक व्यूअर है रोहित जॉन। एज इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इस क्वेश्चन इज व्हाई डिड आई डेवलप मेलास्मा एट दिस एज, इज इट मोर कॉमन ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ लाइफ? एंड देन वी वर टॉकिंग कि वुमेन में बहुत कॉमन होता है लेकिन मेल्स में भी होता है, तो क्या इनको आप बोलना चाहेंगे डॉक्टर? हाय, आई डोंट नो योर एज बट आई एम गेसिंग आई विल आंसर फॉर एवरी एज ग्रुप देन। Usually younger age में this is not common, so I'm assuming that you're not a very young boy. So men में melasma होने का definitely chances होते हैं। 10 to 20% of patients in our OPD as well in different studies also have been men who are suffering from melasma. उनका usually sun exposure ज्यादा होता है। So for traveling for work or working out in the fields, उनका सिंस सन एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा होता है तो उनको चांसेस ऑफ मेलाज्मा भी ज्यादा रहते हैं। यूजुअली mid 30s to mid 40s मेलाज्मा में अकर। आपका एज इफ यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन देन दैट विल आल्सो बी हेल्पफुल फॉर मी। बट क्यों हुआ मेलाज्मा, इसका आंसर तो आपको डायरेक्टली कोई नहीं दे सकता है। बट कोई बात नहीं, अगर हुआ भी है तो भी आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए एंड देन डेफिनेटली you can get freedom from melasma. You can make sure it becomes a little lighter, little more manageable, and the aesthetics of your face will also become better, I'm sure. और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर, कैन मेलास्मा बी परमानेंटली क्योर्ड? Cure is a very strong word, I feel. I prefer to say that melasma is definitely manageable. So by manageable, I mean हम थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन रहता है ये, इसलिए हम इसको मैनेज करने की फुल कोशिश करते हैं। सम पेशेंट्स रिस्पॉन्ड अमेजिंगली फॉर द ट्रीटमेंट, सो उनके लिए तो बहुत वेरी वेल मैनेजेबल रहता है। ऑलमोस्ट 40 to 50 पेशेंट्स रिस्पॉन्ड वेल टू द ट्रीटमेंट्स। Some patients, however, are resistant to the treatment of melasma.
तो उनके लिए हम थोड़ी कॉम्बिनेशन थेरेपीज ट्राई करते हैं, तो जिससे अलग अलग डेप्थ ऑफ स्किन पे हम अलग अलग पिगमेंट लेयर को टारगेट करके उसको जितना लाइटर हो सकेगा हम लाइटर करने की फुल कोशिश करते हैं, और इतना तो भी कोशिश करेंगे कि वो और प्रोग्रेस ना हो और स्प्रेड ना हो. So I will say rather than curable, it is definitely manageable. Okay. And doctor, before we sum up, any take-home message for our viewers? This one is especially for the females out there, because I understand you're all going through a lot in your life. Females are usually what I call a superwoman. They're always multitaskers. They're highly efficient human beings. They're far superior in terms of managing life, managing everything. So जब ये एडिड स्किन कंडीशन उनको होता है तब दे गो थ्रू अ वेरी सैड फेज इन देयर लाइफ. For Indian population, definitely sometimes cost factor also comes into condition. Societal factors also come into condition. So if you are suffering from melasma, I would suggest जैसे आपको इनिशियल थोड़े चेंजेस दिखे आप डॉक्टर के पास जाए. इसके बारे में स्ट्रेस मत लीजिए. अगर आप जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. Other than that, I would suggest to just be happy overall. Just don't stress too much about it. Once you're happy, you feel better and you look better. And pigmentary changes will come and go. Just take proper treatment from someone who's qualified. Don't stress too much about it. You are all entitled to have a good quality of life. So if you are suffering from melasma, no need to be underconfident or have a poor quality of life. Just go out there, meet a dermatologist, take a consultation, and I'm sure a lot of your barriers of your mind will open up, and you will feel much better afterwards regarding this. Thank you so very much, Dr. Mahika. It was wonderful talking to you. So thank you for your valuable time. Thank you for this very informative session. Thank you once again. Thank you so much, Sayukta. Likewise, thank you so much for great anchoring on your part also. I had a good time talking with you. And we really look forward for many more such sessions with you in coming times. Absolutely. Thanks to all the viewers also for tuning in. I really appreciate your support. Thank you so much. Thank you, doctor and viewers. Yeah, thank you for your active participation. Stay connected to our beautiful Spotless Skin page. Stay happy, stay healthy, stay spotless, stay beautiful, and keep glowing. Goodbye. Take care.